Close your eyes, inhale Namaskar Mudra, spine straight, and chant after it. Om Sangachadyam Sambodhadyam Sambho Manasi Janatam Devavagam Yatha Purve Sanjanana Upasate Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Saviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Yogena Chetasa Padena Vacham Malam Sarirasya Chavedakena Yopakarotam Prabhuram Muninam Patanjalim Pranajalirana Tashmi Om Shanti 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 While it's little warm, gently attach your eyeball and face. Gently open your eyes. आज योगा फिलोसफी स्टार्ट होगा ना? हाँ जी। पेज नंबर कितना है बोलिए? ये मैम 56। Okay.
So yoga philosophy में क्या बोला जा रहा है कि Patanjali is the traditional founder of the yoga system and is regarded as the complement of Samkhya. The word yoga literally means union. That is spiritual union of individual soul with the universal soul and is used in this sense in the Vedanta. ये हम लोगों को पता है, मतलब अभी तक जितनी सारे पढ़ाई किए हैं ये इतना तक तो समझ में आ रहा है, राइट? Bhagavad Gita defined yoga as a state in which there is nothing higher or worth realizing and firmly rooted in which a person is never shaken even by the greatest pain. भगवत गीता में क्या बोला जा रहा है कि what is yoga? That is when someone is in deep pain, मतलब कि deepest pain में है, तब जाके भी वो सही एक्शन ले सके. That is the right knowledge of yoga. That is the right state of yoga, you can say. That state free from all pain and misery is yoga. According to Patanjali, yoga does not mean union, but spiritual effort to attain perfection through the control of the body, sense and mind. पतंजलि क्या बोल रहा है कि पतंजलि बोल रहा है it is not just a union, it is what it is something like controlling our body, mind and spirit and sense to action in a free action ऐसे ले सके कि when you're free from everything, every kind of pain, in that sense you can just take action. तब जाके आप जो भी एक्शन लोगे वो एक्शन सही दिशा में होगा. एक बार मैम फिर से बताना कि मैं ये बोल रही हूँ कि पतंजलि ने क्या बताया. पतंजलि ने ये बताया कि when you are in deepest pain, right? मतलब बहुत सारे not only in pain, there are a lot of things going in our head, a lot of things going in our mind, right? But what we have to do is we have to control our body and sense and mind. That's the basic thing. And when you can just control your body, mind and sense, then you can action accordingly. तब जाके जो भी action होगा, that is a right action. Fine? Through right discrimination between Purusha and Prakriti. Okay. Yoga is intimately allied to Samkhya. Yoga means spiritual action and Samkhya means knowledge. This is the basic difference between yoga and Samkhya. Samkhya क्या बता रहा है? Samkhya बता रहा है about knowledge. And योग क्या बता रहा है? योग बता रहा है that the action form. What is the action form of? Basically, yoga is the practical form of Samkhya that we can see. Understood? Samkhya is theory, yoga is practice. Unline kar lo. For all practical purpose, Samkhya and yoga may be treated as the theoretical and practical side of same system. So both are basically same, but there is a difference. This is a practical side, this is a theoretical side. The yoga mostly accepts the metaphysics and the epistemology of Samkhya. It shows a practical path by following which one may attain Vivek Jnana, which alone leads to liberation. Yoga accepts three pramanas: perception, interference, and testimony of Samkhya, and also the 25 metaphysical principles. Yoga believes in God as the highest self distinct from other selves. Hence, it is sometimes called Sheshvara Samkhya or theistic Samkhya.
as distinct from classical Samkhya, which is Nirashwara or atheistic. बेसिकली क्या है कि योगा बिलीव्स इन गॉड. लाजी ने बता रहे थे ना कि संख्या इज नॉट बिलीविंग इन गॉड. हाँ. एंड योगा बिलीव्स इन गॉड. ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस. ये भी लिख लें. The Yoga Sutra of Patanjali is the first authoritative text in the system and is divided into 4 parts. The first is called Samadhipada, which deals with the nature and aims of concentration. ये underline करो. हाँ. The second is Sadhanapada, that explains the means to realize this end. Third is Vibhuti-pada, deals with the supranormal power which can be acquired through yoga. Fourth is Kaivalya-pada, describes the nature of liberation and the reality of the transcendental self. The Yoga Sutras of Patanjali were believed to have been written in the 2nd century BC. A commentary of this text was prepared by Vyasa and later on was followed by a number of learned interpretations of it, all of which help to explain the yoga philosophy. So the main book is Patanjali Yoga Sutra. Uske baad then Vyasa, and then a lot of interpreters commentary on that the particular book which explains yoga philosophy written by Patanjali. And ये पतंजलि का जो भी authoritative book है योगा सूत्र, इनमें 4 chapters है basically. Chapter 1 is Samadhipada. Chapter 2 is Sadhanapada. Chapter 3 is Vibhuti-pada, and chapter 4 that is Kaivalya-pada. ठीक है. ये थोड़ा आपके कॉपी में भी नोट डाउन कर लो. ठीक है. नहीं तो ये भूल जाओगे. ये अभी नोट डाउन करो, नहीं तो भूल जाओगे बाद में.
हो गया? मीनिंग लिखती हूँ। हम्म, वो 4 चैप्टर्स वाला हो गया लिखा? हाँ वो उसकी ना वो लिखती हूँ, मीनिंग डील्स विद सुनाई नहीं दिया, और एक बार बोलो। जी क्या बोल रहे हो? सुनाई नहीं दिया मुझे। मैं वो पद्स के साथ ना उसकी वो शॉर्ट वो लिख रही हूँ साथ में। अच्छा, समाधि पाद में लिखो कि दिस डील्स विद नेचर एंड एम ऑफ कंसेंट्रेशन। हाँ लिख दिया। साधना पाद में लिखो इट एक्सप्लेन्स द मीन्स टू रियलाइज दिस एंड। टू और रियलाइज रियलाइज दिस एंड, दिस एंड से मतलब explains that means how to realize the concentration part, that part. Vibhuti-pada deals with the supernatural power, हाँ ये लिख। and the Kaivalya path describes the nature of liberation. ठीक है? Yes. Psychology of yoga. The path of yoga is based on sound psychological foundation. Hence, to appreciate this path, the psychology. एक्सक्यूज मी मैम, आप ना वैसे पता है क्या, जैसे हम जैसे अभी ये लिखा ना इम्पोर्टेंट में, मैं क्या जिस भी टॉपिक का हो तो फिर वो ऐसे ही लिख राइट डाउन उसी समय कर लिया करेंगे। Okay, not an issue. और लास्ट दिन जो 25 एलिमेंट्स मैंने बताया ना, वो भी राइट डाउन करके लेना है। ठीक है। ठीक है? The path of yoga is based on sound psychological foundation. Hence, to appreciate this path, the psychology of yoga must first be understood. The most important element in psychology of yoga is chitta. Chitta is the first modification of Prakriti in which there is the predominance of Satya over Rajas and Tamas. So the basic foundation is the Chitta. ठीक है? एंड इसके ऊपर क्या है कि सत्य रजस तमस जो गुण है वो इसके ऊपर काम करते हैं और प्रीडोमिनेंस की तरफ है. It is material by nature, but due to the closest contact with the self, it is enlightened by its light. It assumes the form of anything in whose contact it comes. Due to the modifications of the chitta according to objects, the self knows these objects. According to Yoga Sutra, though there is no modifications in the self except as the reflection of changing chitta vrittis, the modifications of the chitta. It is called chitta vrittis. Underline कर लो यहाँ पे. ठीक है?
Just as the moon reflected in the river seems to moving, there is an appearance of change in it, just as the moon reflected in the river seems to moving. जैसे मून कभी रिवर पे मून का रिफ्लेक्शन देखा है रिवर पे? कभी मून का रिफ्लेक्शन रिवर पे देखा है? कहाँ देखा है? मूवी में। कौन सी रिवर में? नहीं, रिवर में ऐसे नहीं, मतलब मूवी टाइप में। मूवी में देखा है। तो वहां पे कैसे दिखाई देता है कि इट लाइक्स इट मूविंग, ऐसा दिखाई देता है ना? इट जस्ट गोइंग फ्लोइंग राइट नाउ, फ्लोइंग द वे, ऐसा दिखाई देता है ना? सो उसी तरह ही है दिस काइंड ऑफ चित्त वृत्ति, द मॉडिफिकेशंस ऑफ द चित्त। हर वक्त ये चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है? जस्ट अच्छा when true knowledge is attained, the self ceases to see itself in these modifications of the worldly pleasure and suffering. This attachment and aversion is bondage. The only way to get rid of this bondage is to control the modifications of the chitta. This control is a result of yoga. In the words of Patanjali, yoga is a cessation of the modification of chitta. Yoga chitta vritti nirodha. So what does it mean? Yoga chitta vritti nirodha? That is a cessation of the modifications of the chitta. जो भी चित्त लेवल पे जो भी मॉडिफिकेशंस हर वक्त हो रहा है, हाउ टू सिसेज दैट, हाउ टू निरोध कैसे करना है? इतने सारे मॉडिफिकेशंस को जो हर वक्त होते जा रहे हैं, उसको निरोध कैसे करना? ठीक है? Stages of chitta. Now what are the stages of chitta? Chitta has 5 stages which are known as chitta bhumi. Unlike them. और कॉपी में भी लिख सकते हैं चित्त भूमि. The 5 stages of chitta are called chitta bhumi, and these 5 stages are Shipta, Mudha, Vikshipta, Ekagra and Niruddha. Now what are they? Shipta, what is Shipta? This is the stage in which the chitta distracted mind, disturbed. This is the stage in which the chitta is very much disturbed and remain loitering after the worldly object. बहुत disturbance है in this stage. This is a basic. Mudha क्या है? When there is predominance of tamas. Just as when one is overpowered by sleep, the stage of the chitta is known as a mudha. मतलब क्या है कि मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है कुछ काम करने में. This is this kind of stage when tamas predominance. ठीक है? Now what is vikshipta? This is the state in which, in spite of predominance of satya guna, the chitta is oscillating between the tendencies of success and failures created by rajas. तो यहाँ पे क्या है? सत्य भी नहीं है, सत्वन भी नहीं है, एंड तमस का जो गुण था मूधा में वो भी पूरा नहीं है, वो भी नहीं है एक्चुअली. यहाँ पे क्या है? राजस गुण का जो भी गुण है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो टेंडेंसीज जो है वो आ रहा है. मतलब there is success, there is failures, there are a lot of things going on. The chitta of gods, the chitta of the gods and that of beginners in yoga is of this sort. This differs from the shipta stage because due to the predominance of satya sometimes there,
is temporary ceasing of the modifications of chitta in this stage. तो there is a difference. क्षिप्त में क्या है, क्षिप्त में भी disturbed है, विक्षिप्त में भी disturbed है, but विक्षिप्त में क्या है कि जो cessation power है वो थोड़ा prominent होते जा रहा है. जो सत्व का नेचर है, जो सत्व का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो थोड़ा पॉजिटिव होते जा रहा है. समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ जी मैम, ये ना हमें लेवल 1 में ना पेपर में आया था. एक्चुअली हिंदी वर्ड्स लिखे थे तो मेरा शायद इसलिए गलत हो गया. इंग्लिश में होता तो ठीक हो जाता. शिफ्ट का आया था कि मन की स्थिति, वो स्थिति मतलब कुछ अजीब सा ही हिंदी का वर्ड यूज किया हुआ था. कौन सा माइंड, और मतलब स्थित माइंड और अस्थित माइंड. तो अभी समझ में आ रहा है ना? मैम इंग्लिश का तो समझ में आ जाएगा, हिंदी में आ गया था वो. अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा है? ये तो आ गया ना, डिस्टर्ब माइंड का है शिफ्ट. और राइट, ये पर शिफ्ट में मतलब कुछ वैसे देखो, पॉजिटिविटी है. द थिंग इज वैसे याद रखना है कि व्हेन यू आर सीइंग अ संस्कृत वर्ड और अ हिंदी वर्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, दैट्स इट. बस उसका उसका मीनिंग समझ लेने से बस आपका यू यू जस्ट डन. बस उतना ही समझना है. जैसे आप शिप्त आप लिख के रख सकते हो कि दिस इज अ डिस्टर्ब माइंड. मूधा क्या है? व्हेन द तमस गुण इज प्रिडोमिनेंट. हाँ लिखा जी. हाँ. व्हेन विक्षिप्त इज देयर, विक्षिप्त में क्या है? देयर इज आल्सो डिस्टर्बेंस, बट सत्य गुण इज ट्राइंग टू overlapping over things, trying to figure it out, something like that, this kind of stage. Ekagra kya hai? The stage of chitta when it is fixed on some subject due to the predominance of satya is known as the ekagra stage. Just as the flame of the burning lamp remaining always pointing to one side and does not flicker hither and thither. जैसे कभी लैंप देखे हो, मोमबत्ती जलते हुए, वो जो लाइट है, जैसे जब कोई दिया जलाते या फिर कोई कैंडल जलाते हैं हम लोग, जो मतलब फ्लेम जो है, वो फ्लेम कैसे जलती है? आग से. हाँ, आग जो है, आग जो मिडिल में जलती है ना, वो किसके वजह से, किस मैच, एंड उसके मोमबत्ती के अंदर क्या रहता है? वैक्स रहता है एंड एक कॉटन भी रहता है ना, होता है. हाँ थ्रेड एंड कॉटन भी रहता है ना. हाँ. तो वो कॉटन एंड थ्रेड के आसपास ही रहते हैं, वो और कहीं नहीं भरकते. दैट इज द एकाग्र. व्हेन यू आर कंसेंट्रेटिंग इन वन पॉइंट. जो वो आग है, वो आग हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है पूरा एक साथ पूरा जो कैंडल है पूरा ही जला दे, ऐसा भी हो सकता है. अगर वो थ्रेड नहीं होते तो पूरा कैंडल एक साथ ही जल जाता है ना. तो वो तो नहीं जल रहा है ना. सो क्यों नहीं जल रहा है? बिकॉज ऑफ द थ्रेड. वो थ्रेड है, इसीलिए वो कंसेंट्रेशन तैयार हो रहा है वहां पे. दैट सत्य गुण इज देयर. मतलब व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसेंट्रेट इन वन पॉइंट, मतलब यहाँ पे भी सत्य गुण इज देयर. And when you are trying to concentrate in one point or in one subject, that is the basic thing of Ekagra. ठीक है. Now what is Niruddha? When only impressions remain in Chitta after the cessation of the modification. The stage is known as the Niruddha stage. It is a stage which is known as yoga.
Just of the above mentioned 5 stages, the first 3 are harmful in yoga and may be removed by practice. The last 2 stages are useful in yoga. The first 3 stages are, matlab, these are the preliminary stage when you are practicing yoga, right? And you can just eliminate all those things by practicing yoga to the stage of ekagra, to the stage of niruddha. ठीक है? फॉर्म्स ऑफ चित्त क्या स्टार्ट करें आज, या फिर ज्यादा हो जाएगा? ये वाला कर लेते हैं टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ चित्त, मॉडिफिकेशन। हाँ, मॉडिफिकेशंस रहने देते हैं, फॉर्म्स ऑफ चित्त कर लेते हैं। हाँ, ये तो छोटा टॉपिक। Because chitta, what are the forms of chitta? Because chitta is one of the nature of 3 gunas. It always remains changing due to the predominance of one or the other of the gunas. क्योंकि ये चित्त जो है is the nature of 3 gunas. जो 3 gunas है वो 3 गुण ही यहाँ पे रहते हैं, तो कोई ना कोई एक गुण तो कभी ना कभी हावी होगा ही होगा, right? So with this predominance, 3 main form of chitta can be noticed, which are under praksha, pravritti and sthiti. In these, praksha kya hai? In these states, the chitta is predominated by satya guna. Tamas remains subordination. In this form, the chitta aspires for different powers of yoga. ठीक है? pravritti kya hai? When the tamas becomes weak and the chitta is predominated by the rajas, it appears to be enlightened and full of dharma, knowledge and reunification. And sthiti kya hai? As the rajas is subordinated, the chitta predominated by the sattva element. मैम एक बार फिर से बताना, प्रक्रिया क्या है? Just 1 minute. हाँ, as the rajas is subordinated, raja is subordinated, ठीक है? The chitta subordinated the chitta. राजा क्या कर, राजस गुण क्या कर रहे हैं? सब चित्त को सबऑर्डिनेट कर रहे हैं, and predominated by the sattva element gets established in this own form and attains a discrimination reason. This form of chitta is the स्थिति, मतलब एक स्थितिशील अवस्था में जब रहते हैं, जब रजस गुण प्रिडोमिनेट करते हैं, पर जो सत्व गुण है वो एलिमेंट भी यहाँ पे रहते हैं. ठीक है?
These we can come. Yes. Dhyana, dhyana, samadhi. I'll cover it up tomorrow. Not an issue. तो कल कोई इशू नहीं है ना आपका? नहीं. कल हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ जी. तो आज इतना तक ही रखते हैं. तो जितना तक हुआ है उतना तक समझ में आया है ना? हाँ जी. ठीक है, चलो एंड करते हैं सेशन विद प्रेयर. Close your eyes and hand Namaskar Mudra, spine straight, and chant after me. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palm. While it's still warm, gently attach your eyeball and face. And gently open your eyes with a beautiful smile. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you.